RF sputtering multi-target for the heterostructure detection, and also some basic equipment related to the nanotechnology. So we have to use this for the making the different nanomaterials and the applications for the applications and for the sensing applications. Sensing lab is also there for that. So we can make the different type of the sensing. So you have to visit and see the equipment, but still there is no functioning. It means that if you have applied any type of the samples, and you can see the what type of the what type of the FESAM is there, so you can find the characterization of that samples. So the characterization facilities are available. Some equipment are the scholars are available. So you can visit the website of this. So there is a performance. You can fill it and you can sign by the your supervisor. So you can do the any type of the. Okay, thank you. So you have to visit. Enter. Passes through this second section of this model. It composed of different kinds of lenses. In the condenser lenses, some deflection system, and final lenses. So final lens is called as an objective lenses. So in an optical microscopy, what we have, like a photon, like light source, convex or concave lenses, whatever we call it. But here the lenses is special kind. Like we are using a electromagnetic lens because electron is a charged particle, so we have to confine it in a fine probe or a beam. So based on the electromagnetic effect of these lenses, we are confining those electrons, and after passing with this section, finally the electrons will sputter or inject on this specimen on the sample, and from that electron matter interaction takes place. We will get some secondary electrons, backscatter electrons, like secondary signals, and we capture those signals and analyze them on our computer. Is of my chamber. You can see now this is called the final lens of whole piece. So above this is an objective lens. This one. Finally, all the electrons is confined and converges over that objective lenses and focus on this specimen. This is our specimen holder, and already specimens like samples are being deposited here. So let me show you first what a stage is look like. So in order to analyze the samples, we have special kind of a small specimen holder. It's called as a stub. Sample is put in that deposited on that sample. Here you can see now the black thing is called as a carbon tape, because electrons is a charged particle, so we have to provide them a conductive path. So it is also conducting, it is made up of tungsten or some kind of material. Carbon is almost like conducting kind of a layer, and over that sample is being deposited. Sometimes what happens is our sample is not very conductive. It's insulating property. Surface is insulating. So in that case, all the electrons are going to accumulate on the surfaces. So we cannot get a perfect signal. We cannot capture those electrons. So in that case, we will use sputtering unit to sputter out some conductive layer over that sample. So it will generate a conductive path over the surface, below the surface, and all the electrons which are passing on the surface will pass on towards this sample. So in between the process you do that? No, not the process. First of all, we have to confirm that our sample, what's the nature of our sample. If it is a conducting, then we are okay. We are going to just deposit it over the surface stub and we are good to analyze it. If it is not conducting, then we have to coat it first. Yes. Then place and then. Otherwise, you can start with the scan. One sample is already in. Okay. He will do the scan at a different. So at we have initially we can there's only one sample, but we can put over 5 stuff individually. We can see that 5 samples. Yes, there are 5. Yes. Yes. So this is
to the pause button, like his phone interface. Currently beam is off, so I have to start the beam first. Now it's a live scanning of whatever is deposited over the stuff. I've magnified that window. So presently it is at a scale of say this 500 nanometer. 500 nanometer, like the whole window is of dimension of like 500. Because it's a square window, so the length is scale up to 500 nanometer. Like 500 nanometer of that area is the scanning length. So if I, let's say I capture it. So now it is scanning pixel by pixel and accumulating it and getting a final image, which is more elaborated and more Resolution. than previous one. So at max we can go up to like 3 lakhs of magnification, up to like 200 nanometers of length. Currently it is 1,50,000 I guess. Currently it is 1 because our sample is very big in Yes, that that's resolution, so we can. It can You people are master student or PhD? Yes. So, we are in chemistry department. Okay. So currently this system is working. So if you have any samples to just go through the website and form is available. So even at the scan rate of say this is 500 nanometer, minimum right now we can go up to 200 nanometers. resolution is also quite good. But up to 500 nanometers is good. You can visualize the thing. Resolution is far better. So the whole 1700, 1600 reduces the overall loss. Okay, shall we move to the next issue? So that, Currently tungsten is better. copper K alpha radiation here we are using with the wavelength of 1.5414 angstroms. So this is basically used for the determination of crystal structure. Now, all the materials that exist basically have the 7 properties like this: cubic, orthogonal, rhombohedral, tetragonal. So whatever be the material exists in nature fall under this 7 crystal structure category. So जो भी crystal structure है, we can do its determination through the X-ray diffraction. So it has X-rays and the phenomena is diffraction. Concept of using X-rays is also there because the interplanar spacing or lattice spacing is of the order of crystal separation, means between the layers we have 2 to 4 angstroms. That's why we use copper K alpha only for the crystal structure. Matching has to be there, whatever the source we are using and what we are seeing. जैसे होता है ना कहाँ पे चाकू यूज करना है कहाँ तलवार. So it depends upon what you want to see. So tools should be of that resolution only. So first point is that this is used for the determination of crystal structure. So whether the material is crystalline or amorphous or polycrystalline, all these 3 can be determined through the X-ray diffraction. Chair on करिए पीछे. Maybe the determinate structure means हाँ. can you find suppose a solid structure is truncated octahedral, how many hexagonal and how many square cell is present there? Yes, because in X-ray diffraction we used to get the graph between 2 theta on the x-axis and intensity on the y-axis. So different planes have different intensity. That represents that whether the given material is in the form of sheets or hexagonal, then the growth will be along that particular plane. So there is one concept of Miller indices 1, 0, 0, 0, 1, 1. So we assign these planes to the XRD peaks, and on the basis of these 3 factors, one is intensity, second FWHM, third position, we are able to assign this JCPDS file and accordingly name the state. Like titanium oxide have different rutile and all these things. So with this we can do that. Crystallinity basically depends on this constructive interference part. So the material is crystalline means as far as arrangement of atoms is concerned, they are regular, repetition of atoms. So once there is a repetition of atoms, all of them constructively to give rise to the ultimate intensity. But if the structure is amorphous, means that there is no order, means they are not following any constant repetition, then it's a broad. And is it any tricks can available to determine whether the crystal is formed or not? Simply do this scan X-ray refractogram. From the main peak, we are able to find out whether the material or 0.01 degree. That will decide how much time it will take. Use
run the sample for 10 minutes. But if you want very good, then it goes up to 40 minutes also. After detecting bill access, is it possible to for our sample to analyze or any other Yes, analysis? because XRD is not a destructive technique. You can go it. But sometimes, as you have seen in the FSM, Nabeel mentioned that you need to do this gold coating or silver coating, which happen to be conducted. So first we practice go for this XRD, and if the sample is not conducting, then we go for this gold coating and then do the FSM. तो XRD में गोल्ड का पीक आ जाएगा आपके मटेरियल के अलावा, तो पहले XRD कर लेते हैं फिर उसके बाद वो कर लेते हैं ऐसा, ठीक है? तो अब आप लोग जाके FTI वाला सिस्टम देख लो। वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है एंड जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन इफेक्ट होती है जिसमें हम स्ट्रोक एंटी स्ट्रोक रेलिंग स्टैटिक उससे थोड़े से डिस्टेंस पे आती है रमन की फिलोसॉफी होती है। इस रमन इफेक्ट के लिए मतलब ये इनलास्टिक स्कैटरिंग पे बेस्ड है और इसके लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है सीवी रमन को इन द ईयर 1930। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम जनरली जैसे कार्बन मटेरियल्स होते हैं तो लाइक उस कार्बन मटेरियल्स में हमारे डबल बॉन्ड्स भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स भी होते हैं, तो हम उस चीज़ को डिफाइन करते हैं उसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड द सेम जैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह होते हैं अटैचमेंट जैसे COH या आपकी C डबल बॉन्ड N, तो ये सारी चीज़ें हम FTIR में यूज़ करते हैं। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी तो क्वांटिटी एनालिसिस होती है, कंसंट्रेशन और ये सारी चीज़ें। इसमें सोर्स क्या है इसका रमन का? लेजर। लेजर। And so, ma'am, any specific laser or just maybe जैसे नाम हम सेम वगैरह में define टंगस्टन होंगे। यूज करा, Sorry? सेम में हम जैसे टंगस्टन यूज करा हाँ तो एथिकल में आप मतलब टंगस्टन भी यूज करते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट फील्ड इमेशन भी यूज करते हो, जैसे आपने अभी जो देखा वो फील्ड इमेशन है और टंगस्टन वाली जनरली सेम होती है वो हम अब शायद बहुत कम यूज करते होंगे, ये यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ FSM फील्ड इमेशन। तो मैंने इसमें लेजर ही एज अ सोर्स यूज बेसिकली इसमें जो IR होता है रमन होता है, अगर नहीं रमन डाटा या IR डाटा है तो फंक्शन ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप की स्टडी करनी है तो आप FTI के लिए जाओगे, बट अगर आपको किसी कार्बन मटेरियल का जैसे कि ग्रेफिटिक प्लेन जानना है, जैसे C डबल बॉन्ड जानना है, C के साथ सेम होना चाहिए, ये डिपेंड हम करते हैं बेंडिंग स्ट्रेचिंग और जो पोलरिटी होती है उस पर, हाँ, जो डिफरेंस मेन रमन पोलर और नॉन पोलर के बीच में। तो मतलब उस पर ये डिफाइन होती है। तो आप जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जानना है, सेम मतलब C और C और ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आफ्टर एनी प्रॉब्लम इफ यू ऑन AC इशू प्रॉब्लम AC की इशू ये मुझे मैं ये पूछ रही थी ऐसा तो नहीं कि AC ऑन नहीं कर सकते क्योंकि काम करने के बाद कुछ चीज़ें नहीं AC में प्रॉब्लम है इसलिए हम मशीन ऑन नहीं कर रहे हैं ओके क्योंकि ज़्यादा ज़्यादातर मैंने यही सुना है ना कि AC में रखते हैं तो हीट अप होने के वो होते हैं ये क्योंकि हीट प्रोड्यूस करते हैं इतनी मुश्किल से अभी वर्किंग में XRD है FSM HRTM होने वाला है। HRTM वर्किंग में है बट अभी इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो थोड़ी कम है तो हम इसलिए उसे वर्किंग में नहीं बोल सकते। और रमन और FTIR FTIR वर्किंग में है बट FTIR ये इशू ये है कि हमारा अभी AC कैबिनेट नहीं चल रहा है बाकी हमारी मशीन सारी वर्किंग है ओके बस पैनल थोड़ा खराब है इस वजह से हमारी इशू आ रही है। ये हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है जो बेसिकली आप हाँ जैसे हम लेते हैं ना बायोलॉजी में ऑर्गेनिक मतलब कोई सा भी मटेरियल हो आप उसका देख सकते हो इसलिए ये ना ये आपको ये सारे नहीं है अच्छा यहाँ पे हम अपना पैरेंटल ये सब है ना फिट कर लेते हैं आपको कितनी रेडियो फ्रिक्वेंसी देनी है यहाँ से चेंज कर सकते हैं प्लाज्मा के लिए है, ठीक है। ये सब पूरा कंट्रोल यहाँ से होगा। ये चैम्बर में कितना आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, किस लेवल का प्रेशर क्रिएट करना है, ये सब इधर से होगा। यहाँ पे सिर्फ आपका डेटा आता है, आप उस डेटा को लगाएंगे तो दैट्स इट।
आप पहले इसको प्लाज्मा सिंथेसाइज नहीं करना, प्लाज्मा की हेल्प से कोई भी सिलिकॉन सिंथेसाइज करना। प्लाज्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। No, ma'am, this is not biotechnology or life science. This is nanoscience. Plasma is the fourth state of matter. Liquid, solid, gas, and plasma. Okay. तो यहाँ पे हम सबस्ट्रेट रखते हैं। सबस्ट्रेट मतलब जिसपे आपको कोई भी फिल्म बनानी है, बनाओगे ना किसी भी फिल्म, अब जैसे ये फाइल है, अब इसको हवा में तो नहीं रख सकते, you have to put it somewhere ना। तो ऐसे ही you have to take some kind of substrate, उसके ऊपर you have to deposit some films। वो टारगेट कहते हैं उसको। टारगेट एक मटेरियल होता है, उसकी आपको फिल्म बनती है। प्लाज्मा बस एक रोल प्ले करता है, जैसे खाना बनाने के लिए यू नीड हीट, राइट। जरूरी नहीं है वो आपको एलपीजी से मिल रही है, सीएनजी से मिल रही है, या फिर उपले से मिल रही है, व्हाटएवर सोर्स यू आर यूजिंग यू कैन यूज। प्लाज्मा इज जस्ट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फिल्म, यू नो, फिल्म सिंथेसिस।